Hello everyone, this is Kiran here. मेरे साथ आज नेहा है and we'll be talking to Neha. She is from Nanpit College here in Pune. She just recently passed out in 2025. You passed out, right? Okay. So we'll be taking mock interview for her and she is well versed with the core Java, advanced Java and many things which are related to the full stack development, and those who want to become full stack development, you must see this mock interview. Here I'll be also explaining some question answers so that you can prepare those, and if you are facing some real interview, then you can give those answers. So welcome Sneha. Okay. Let me start directly on the questions now. Okay. So like we'll start with the core Java first. Yes. Can we make method as a final? Yes, sir. So I'll ask small questions first. Okay. Then we'll see elaborative questions. Is that okay? So can we make method final? Yes. Can we make variable abstract? Yes. Okay. No. We cannot make variable as abstract. Methods will be abstract. Okay. No problem. Can we inherit final class? No. Do you know any final class in Java? Yes. Which one? String. Perfect, string. Can you list out 3 to 4 methods of string class? String dot length method, uppercase, lowercase, string method, replace. Very good. Okay. Which class is parent class of all the classes? Final object class. Object. Hash code is a method of which class? Object class. Is Java is 100% object oriented or not? No. Guys, it looks like a Viva, or you can say it as like just a verbal interview, but it's just considered as a rapid fire. I'm just testing her on various aspects of the Java, where small questions she understand or not, or she has clarity on subject or not. Okay, so if I give return type to constructor, what is going to happen? Compiler treated as the normal method. It Perfect. does not. No, that's correct. If I make constructor, can I give access specifier to constructor? Yes. If constructor is private, what is going to happen? It is the use of singleton pattern design for. It is used for single design pattern, or you cannot create an object, right? Yes. Okay. How to create an object without using a new operator or new keyword? Using deserialization and using cloning methods. Visualization cloning method. Perfect. Can I write main method as a, right now you are writing public static void main, right? Can I write static public void main? Yes. So you prepared, I think, so well. Okay. If I remove this public, will it give error or not? Main method. Yes, it is compile but not the run. Will compile but will not give error. You know sleep method? Yes. Which exception occurs if some problem happens there? In sleep method, it's an interrupted exception. Which exception? Interrupted. Very good. How to create a thread? Using start runnable interface and using start method. Yeah, using an extends thread by extending a thread class, right? Any method of thread class you know? Runnable. Any method of thread class you know? Start, run. Just now you told, right? So try connecting dots. Clear? Can constructor be abstract? Yes, maybe. Maybe. Can interface have a constructor? No. Can abstract class have a constructor? Yes. Great. Great. Do you know any inbuilt 2-3 packages in Java? Inbuilt final Packages. java.lang, java.util, Very good, very good. Any class of util package you know? list, array list, Any class of java.lang you know? input stream. Input stream is of lang? No, it's of IO package. Yes. Okay. Lang package is like string, right? By default, which package is getting imported in Java?
Which By default, which package is getting imported in Java? Package is getting imported, right? So which package is getting imported? Java.lang. Understood? You know default values of variables? default Integer, what is the value? byte or bit. Correct. Integer has 0 value. What is by default? 0. Okay. You know Boolean? What's the value of Boolean? Value or default value. Anything. False. Default value. Very is good. false. Perfect. Very perfect. Okay. So you know it. Don't worry. Long. Space maybe. Zip. 0. Character. Space. So you know it. String. Null. Okay. So remember all these things. So a lot of questions I asked. Right. So I think more than 80% you answer. It's fantastic. Means you know the subject. Okay. You know the concept. Now let me ask you some tricky questions. Rather saying tricky question, basic questions I would say. In Java, super call to constructor, you know? Yes. What happens with the super call to constructor? It is the refer to the parent class of It is the child. referring to the parent class. Okay. What is the difference between this constructor and super constructor? This constructor is the refer to current class, but in that super keyword, it is the refer to parent class of. Yeah, correct. Very good. Yeah. So super is referring to super class. Why you think that you cannot extend any class if class is like if any class has a private constructor? Can you extend that class? No, Why? because private is within the same package and its child class does not Does not call it, support. support it, because super call to constructor will get added there. Getting my point? Yeah, very good. Then coming to next question, like collection, you know, what is the super class of earliest? Abstract list. What is super class of abstract list? Abstract collection. Abstract. Do you know stack queue? Yes. Explain. Stack is the last in first out. Queue is the first in first out. For example, stack it is the getting of books in the table first. Uh, Then then the removing it is the last. It's the first out. It is the stack. But in that queue, it is the first in first out. queue is a class or interface? Interface. Stack. List. Interface. What is the difference between hash map and hash table? Hash map it is the storing the key and value pairs, but it is the hash table. It is the legacy class. It is synchronized and it is the unique key we have to add. Unique key. Unique value Hmm. in that table we can use. Okay. Okay. Do you think that primary key is mandatory in while creating a table, or it's not mandatory? Yes, it is mandatory. Null values. It's mandatory. If you don't create, then you cannot create table. No, it's not mandatory, but it is recommended. It's good to have. What is primary key and foreign key? What is difference? Primary key it is the unique key and it is the foreign keys refer to the primary key of the another table. Yeah. Why to create foreign key? Go ahead, try. Foreign key is the use of null keys for the. It is the I. For example, we have to see the ID and then the value. It is the foreign key. It is the. Okay. So see, if someone asks you guys when to use primary key, when to use foreign key, first of all, how you need to explain. Okay, both are very different altogether. Primary key solves its purpose like it's a unique and null. So to represent any row uniquely, you need to have a primary key. Where primary like a roll number, it's a primary. Why to use foreign key? Because you don't want redundant data. Let's say 5 student will be having India country, so you cannot write India once again.
Correct. So another table will be there, that is country, having one primary key. That primary key will be acting as a foreign key in the student table. Like that you need to explain. Will you be able to explain now? Don't explain again, but this is what the way interviewer is expecting. Okay, so you're good, you have good knowledge, you're reading also. Coming to SQL, you know SQL? Okay. Any example of DML? Insert, update, delete. We have to use the How to write update query? What is syntax? insert, Update query. update table names, and that set, then values, Table name, then update. First you write update, yes, then table name, then set, hmm, then values. then column name and then value. Correct. That is update query. Yes. All right. Okay. Why to join two tables? Why do you join first of all? It is the matching of two tables Hmm. Matching of two tables. for the use. Yeah. So if you want to find matching data, correct? Na? Then that will be, if you want to find what? Matching data. Then that is the inner join. Correct? If you want to fetch data from two tables, first of all, you should be telling, if you want to fetch data from two tables, then you need join. And there are two types of joins. Which are those? Left join, right join. Inner join and outer join. And self join. Three types. And in outer join, there are two types. What? Left and Right. Very good. So moving to Spring Boot. This interview is going very fast. Okay. So I wanted to test you rapidly and you're answering most of it. Should I ask Hibernate or Spring Boot first? How to integrate Spring Boot and Hibernate? Using the application.properties file. What do you write there? In that application.properties, properties like the URL name, root password, then the dialect. What is root password means? Root password means Password of database. Again. then the properties MySQL dialect, then H2 database. Again. Dialect. Why to use dialect? Dialect, it is the automatically generated of SQL database. Which is the default web server in the Spring Boot? Default JSON. Server. Tomcat. Which one? Tomcat. Which dependencies you add for creating an Spring Boot project? Maven. Okay. But dependencies, which dependencies? Like Starter. Yeah, which starters? starter, web, and then dev tools, MySQL, Very good. Hibernate core. Yeah. These are the dependencies which we add in the pom.xml and Spring Boot will get generated. Okay. Then let me ask you, can you explain me Maven? What is Maven? Maven, it is the tool. It is dependency management tool. It is the ready-made projects. Okay, अगर हमारे पास Maven नहीं रहता तो क्या हो जाता? अगर आपको प्रोजेक्ट बनाते समय Maven नहीं यूज करना है तब क्या होगा? Lot of packages and lot of classes you use. करेक्ट, हमको बहुत सारी चीजें डाउनलोड करनी पड़ेगी, लाइब्रेरीज, और वो प्रोजेक्ट में डालनी पड़ेगी. करेक्ट ना? जो स्प्रिंग बूट होता है उसके अंदर के एनोटेशंस बताइए जरा. Firstly, start the main method annotation Spring Boot application, then the entity class annotation entity, then annotation ID, then the annotation REST controller, then annotation controller, then the annotation service, annotation you. क्या डिफरेंस है एनोटेशन सर्विस और एनोटेशन रिपोजिटरी में? It is the representation, just for representation. It is the under of annotation component. Very good, very good. This is the internal thing you must know, right? Add component is internally they have written for add service, add repository, add configuration.
करेक्ट ना? At rest controller, everybody has at component. Okay, then in Spring, what is auto wiring? It is the automatically creating an object. So auto wiring से ऑब्जेक्ट बनता है पक्का, या वायरिंग होती है? नहीं, देखो, एक तो है कि लाइट को बनाना और दूसरा है लाइटों को कनेक्शन देना। यहां तक समझा? लाइट कहाँ बनता है? बोलो। लाइट कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में बनता है कि नहीं? ये समझ में आया? और दो लाइट को जोड़ने के लिए क्या लगता है अपने को? बीच में क्या लगता है बताओ? वायर। यहां तक ओके है? तो जो फैक्ट्री में बनता है ना, करेक्ट, तो स्प्रिंग में वो बीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोल देंगे उसको? बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री मतलब जहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी बीन्स बनती है। वो क्यों बनती है? एट कंपोनेंट से। किससे बनती है? एट कंपोनेंट और एट बीन से। याद रहेगा? तो चलो बताओ, ऑब्जेक्ट्स कौन से एनोटेशन से बनते हैं? एट कंपोनेंट एंड एट बीन। और वो बनते हैं फिर कहां जाके स्टोर होते हैं? एट वायर। लाइट्स जो आप देखते हो वो कहां रहते हैं? फैक्ट्री में। वैसे ये ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्री, उसको क्या बोलते हैं स्प्रिंग में? बीन फैक्ट्री। व्हाट माय पॉइंट? एंड फॉर ऑल ऑडियंसेस आई एम एक्सप्लेनिंग हर अगेन बिकॉज जस्ट बिकॉज कि यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट ना? सो ऑब्जेक्ट कहां बनेंगे? बीन फैक्ट्री में। उसी को कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंटेनर। तो स्प्रिंग कंटेनर में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स कैसे बने? एट कंपोनेंट। अंडरस्टूड? बन गए। अब तुम्हारे क्लास में एक ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट, जोर से बोलो। क्या? ऑटो वायर। अब क्लियर हुआ ना? तो ऑटो वायर। तो ऑटो वायर से ऑब्जेक्ट बना क्या? वायर से लाइट बनता है क्या? वायर से क्या होता है? सिर्फ कनेक्शन। तो एट ऑटो वायरिंग से ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन से एनोटेशन लगेंगे? ऑब्जेक्ट जब बनते हैं तो कौन से एनोटेशन से बनते हैं? एट कंपोनेंट एंड एट बीन। परफेक्ट। और कहां बनते हैं वो ऑब्जेक्ट? कंटेनर है ना, उसी को बीन फैक्ट्री बोलते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो अभी याद रहेगा, बीन फैक्ट्री, कंपोनेंट, ऑल दिस थिंग्स, राइट? छोटी छोटी चीजें हैं बट इसको कंसेप्चुअली अगर आप सब लोग करते हो तो बहुत आसान है चीज। और कंसेप्ट जरूरी नहीं आपको पढ़ाना ही है, ये खुद से आप समझो, खुद से सोचो, है ना? चैट जीपीटी का कभी यूज किया आपने? क्यों करते हो बताओ? इट गिव मी द हेल्प ऑफ एनी। परफेक्ट। तो इससे आपको हेल्प मिलती है ना, किस चीज की हेल्प मिलती है? कोई क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स नहीं पता, समझे ना, या आप किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट ना आंसर ढूंढने के लिए मत कीजिए बहुत से बात, है ना? लॉजिकल क्वेश्चंस, यू नो फिबोनाची सीरीज एंड ऑल, फैक्टोरियल ऑफ नंबर निकाल सकोगी? कौन सा प्रोग्राम आपने करके देखा? बोलिए। मैक्सिमम किए होंगे। मैक्स मीन, देन लीप ईयर। वाओ, ग्रेट। थोड़ा लीप ईयर बताइए क्या होता है? Leap year for the first initialize the year, then the for the first for loop it's for the century, then the only it is the बढ़िया, बिल्कुल सही है। थोड़ा पहले कैसे लीप ईयर का मतलब बताओ, ट्राई करो बताने का मतलब। leap year means for example it is the 365 days and 360 days। हिंदी में बताओ लीप ईयर का मतलब क्या होता है? यू नो हिंदी और मराठी? आई नो। वो ट्राई करो ना बताने का। हाँ, गुड। मतलब वो सबको समझ में आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं, ओके। तो लीप ईयर मींस व्हाट? 365 डेज और व्हाट? हाउ? इन फरवरी। यस, इन फरवरी 28 days or 29 days। दैट्स इट। मतलब अगर फरवरी मंथ में जो भी लोग हैं ये इंटरव्यू को देखिए और समझने का ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। अब उसने रह गया लीप ईयर का क्वेश्चन, रह गया वो कैसे लिखते हैं, वी कैन आस्क यू एनीथिंग, राइट? सो एनीवे, लास्ट 2 क्वेश्चंस आई विल टेक फॉर फ्रॉम यू। हाइबरनेट पे लेते हैं, चलेगा? क्या पता है हाइबरनेट में आपको? बताओ। सब पता है? ओके, तो मुझे बताइए हाइबरनेट में कौन से एनोटेशंस यूज होते हैं? बोलिए। First the annotation entity, then annotation table we can use, then annotation cascade, it is the
connecting of the database. हम्म, Then annotation ID. वेरी गुड वेरी गुड. और कौन सा हो सकता है? एट आईडी, एट कॉलम्स, एट टेबल, से ना, एट वन टू मेनी, एट मेनी टू वन, Relationships. एट मेनी टू मेनी, बराबर, एट एंटिटी, बहुत सारे, राइट, एट वैल्यू, तो ये सारे एनोटेशंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइबरनेट फास्ट होता है जेडीबीसी? व्हाट डू यू थिंक? Fast is Hibernate, but we can check the performance in both the Hibernate and JDBC. But JDBC's performance is better. And Hibernate performance is not that better? It is slowing then. Okay, ये slow होता है. But development किसमें fast होगा अगर जल्दी जल्दी कोडिंग करनी है तो? Hibernate. Very good. Yeah. One more thing. Hibernate, can we write queries? No, it is SQL queries. It is automatically creating SQL queries. Okay. Why it is creating? How it is creating? Automatically. Who is responsible for doing that? .cfg file we can. .cfg file. उसमें क्या define करते हैं हम? Dialect. You know, you already told. तो dialect डालने से फिर क्या होता है? वो automatically generating SQL. Yes, correct. Yeah. So this is all about. I tried to touch everything. Okay. So good, nice. But you need my feedback. तो देखो, फीडबैक में ये बोलूंगा मैं, और बाकी लोग भी देखिए, आपको और अच्छा प्रोफिशिएंसी लाना पड़ेगा, है ना? इन इंग्लिश यू कैन जस्ट कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग. यू सी दिस इंटरव्यू, आल्सो लिसन इट, यू विल फाइंड सम मिस्टेक्स इन योरसेल्फ. करेक्ट है ना? और उसमें इंप्रूव करने का. अब इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ देख लिया, फिर मजेदार काम नहीं हुआ ना. से कि नहीं, कहाँ पे आप स्टक हुए, कहाँ पे स्टक नहीं हुए. टेक्निकल नॉलेज में आपका कोई कमी नहीं है, इतना ही होता है टेक्निकल नॉलेज. 70-80% आ गया, काफी है. वेयर द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. अब देखिए, मैंने आपको बीच में क्या बोला, हिंदी में बोलिए. तो आप हिंदी में अगर बोल पाते, मराठी में बोल पाते, इट्स गुड ओनली, नॉट बैड ना. उसी को बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता. बट आपने देखो, टेक्निकल आपको नॉलेज अच्छा था, तो आपने क्या बोला, लीप ईयर, वो 365 वगैरह उधर छोड़ दिया, 28 बोला गया. तो टेक्निकली साउंड है, पर अभी किसमें काम करना पड़ेगा आपको? टेक्निकल आपका साउंड है. इन एक्सप्रेशन ज्यादा बात करो. आप किसी साथ बात करते हो, एक्स्ट्रा बात करो उसके साथ, टेंशन नहीं लेने का. आप समझ रहे हो ना? अनजान आदमी मिला कोई भी बस में, बगल में बैठा है, आप बात करो ना. रियली बता रहा हूं, जितना आप बात करोगे, जितनी लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी आएगी, चाहे हिंदी रहे इंग्लिश में. मैं ये नहीं बोल रहा कि बगल वाले के साथ इंग्लिश में बोलोगे बस में, नॉट गुड ना. बट हिंदी में बात तो करो, मराठी में बात करो. ऑटोमेटिकली मराठी से हिंदी होगा, हिंदी से इंग्लिश होगा, क्योंकि मार्केट को इंग्लिश चाहिए. सो स्नेहा, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वर एबल टू आंसर. एंड नेक्स्ट टाइम और अच्छा इंटरव्यू दो मुझे, जिसमें मैं बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैं पूछूंगा और आपको आंसर देना चलेगा. सो थैंक यू. ठीक है, एंड गुड ट्राई. यू केम अहेड, केम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. दैट्स द बेस्ट थिंग. आपको अच्छा हुआ कि नहीं? ठीक लगा या नहीं लगा? पता चला ना कि और कुछ कर सकते हैं, और अच्छा करूंगा, कुछ तो होगा, है ना? एंड नोबडी इज गुड बैड, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर यूनिक, एंड सो जस्ट कैरी ऑन. ठीक है? सो थैंक यू गाइज, थैंक यू. एंड इससे बहुत सारा सीखिए. कोई से क्वेश्चन पूछे मैंने, कौन से पूछे, कौन से नहीं पूछे, इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से मॉक लेने का ट्राई किया. एंड शी हैज ब्रिलियंटली हैंडल्ड दोज ऑल क्वेश्चंस. थैंक यू, बाय बाय.